जमाना कहे फिर क्यों। बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हो? रजनीकांत टाइप एक्टिंग करने की मैं कोशिश नहीं कर रही थी, वो चश्मा एकदम एन मौके पे पहना। कैसे हो चुन्नू मुन्नूज? एक सेकेंड दे दो हमें आप लोगों की वीडियोस देखने के लिए। परफेक्ट। जग्गू पग्गू, आई एम वेरी गुड। कैसे हो मेरे चुन्नू मुन्नू? सुपर कूल गैंगस्टर्स। ठंड के तो आलम पूछो मत, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये चैप्टर आज खत्म हो जाना चाहिए बिकॉज कल हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज। सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करें आज की क्लास। आई एम वेरी गुड श्रेया, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस कम कर रहे हो, लगातार खूब ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। डन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू शेयरिंग, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। डाउट्स क्या हैं? टर्माइट्स। ये वही टर्माइट्स हैं जो सारी मेहनत को पे पानी फेर देंगे एग्जाम से पहले। कर रहे हो ना? पक्का प्रॉमिस। डाउट्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दो, बहुत मेहनत करो बिकॉज आपने अपने लिए मेहनत नहीं करनी, आपने अपने मॉम डैड के लिए मेहनत करनी है, अपनी फैमिलीज के लिए मेहनत करनी है, अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स के लिए मेहनत करनी है। आप अगर सक्सेसफुल हो गए, आप अगर आगे चले गए तो आप सबको आगे लेकर जाओगे, अपनी पूरी फैमिली को आगे लेकर जाओगे। ओके जग्गू, आई विल चेक दैट राइट नाउ। डन? इज दैट क्लियर? परफेक्ट अहमद, वेल डन। Right, you have to do it for everybody and you have to do it for Vani ma'am, you have to do it for Vedantu. तो चल ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं गाइस। दिस इज माय चैनल। कल मैं पक्का सैटरडे को कोशिश करूंगी कि मैं एक इंस्टा लाइव ले लूं बिकॉज बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है। एंड देन मिलकर अटैक करेंगे नीट पर। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मुझे बताना। बाय द वे, डू यू नो ये बुक Amazon पे नंबर 3 पे हो गई है? डू यू नो दिस? नंबर 3। दिखाओ कुछ। नंबर 3 ऑन द बेस्ट सेलिंग लिस्ट। यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो मतलब मैंने जिंदगी भर में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। दिखा रही हूं कुछ, ये देखो। कैन यू सी दिस? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये तो आशीष सर की है। आशीष सर से मैं मिली हुई हूँ, बहुत सीनियर प्रोफेसर है। और नंबर 2 पे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जो कि पिछले 15 सालों से आ रही है। यस, यू सॉ इट यस्टरडे एंड दिस इज, ओ माय गॉड, इन 1 डे 2 days it is number 3। जाइए बच्चों एंड प्लीज गाइज लीव बिहाइंड योर फीडबैक, लीव बिहाइंड योर रिव्यू। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 1.5 साल में एक बुक निकाली है, 1.5 year। So I've literally spent a lot of time to do it for you. Please make sure that आप फायदा लो इस बुक का guys. You should really get the benefit from this book. That is all that I want. I want you to get benefited. I want you to study. I want this book to help you crack NEET. And when you crack NEET, your entire family flourishes. You flourish. You do super amazing for yourself. चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और voices कैसे not clear? Everybody, can you hear me? वॉइस क्रैक कर रही है? अच्छा एक सेकेंड। चेक चेक नाउ, चेक प्लीज, चेक नाउ, चेक। इज इट फाइन नाउ? ओके फाइन, आई जस्ट चेंज इट। यस मैम, डन, परफेक्ट है। चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आगे बढ़ते हैं। कहां गया हमारा पीडीएफ? ये रहा। तो इसको लेकर पढ़ाई करते हैं। मैं बहुत कुछ करवाने वाली हूँ आपको आज शाम को गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज उसे मिस मत कीजिएगा। दैट लेक्चर इज ऑन क्लास 12 के बाद कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। जरा मैं इसको जूम करती हूँ और आप इसको फिर फोकस कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, जूम करके, ठीक है। एंड गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। ऐसे आपको नहीं लगता होगा बेटा, आप शायद फिर भी सिटीज में हो, बड़े स्कूल्स में हो, पर ऐसे बहुत बच्चे हैं गियन, ऐसे बहुत बच्चे हैं जग्गू, जिनको सच में, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको पढ़ना है।
please tell them about this channel. You are the mascots for this channel. If each one of you tells 4 more people, 4 more people can tell 16 more people, and that is how India will change. Please become the mascots. Please become like the brand ambassadors, the proud Biotonians. Tell this अपने WhatsApp status, Instagram status, अपने Facebook पे अगर यूज करते हो, tell people about our channel. Let us grow together एक साथ, ठीक है? अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये सारी चीजें मैंने करवा दी थी. फर्स्ट टाइम गोइंग अहेड, मैंने आपको टाइटल वॉल्यूम से स्टार्ट करवाना था. ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था. याद आ रहा है? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. मुझे शुरू करना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से. एग्जैक्टली फ्रॉम हियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, very nice, Shashank. I'm so grateful. Let's get started. 5 4 3 2 1. Within the next 1 hour we'll finish this. Tomorrow I will take a quiz on this. So ready? Can we start? Write a on the chat section. Everybody mark your attendance. How do you mark your attendance? Make sure that you are liking. That's your attendance. अब आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से. आई एम टॉकिंग टू यू. क्या आपसे बात करते करते मैं साथ साथ बीच बीच में सांस ले रही हूं? एब्सोल्युटली राइट. हम सब ले रहे हैं. आप टाइप करते हो, आप मूवी देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप साथ साथ सांस भी ले रहे हो. दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम. Volume of air inspired or expired during a normal respiration. While I'm talking to you, while I'm cooking, while I'm gardening, while I'm doing my stuff, the amount of air that I normally inspire, the amount of air that I normally expire is tidal volume. Write it on my chat section, please. The volume of tidal volume is 500 ml. Second MCQ question which comes, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 milliliter of air. It's an MCQ question per minute because you respire 12 to 14 times per minute. Is that clear, everybody? Divya, Anu, Manu, is that clear? Archu is Archita Vishwakarma. Done. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब देखो बेटा, मैं आपसे बात करते करते नंदी इजरम नॉर्मल सांस तो ले रही हूं, बट क्या मैं कह रहा है ब्रीद इन मोड रिजर्व. इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना. कुलकर्णी क्लियर है? एंड इज इट ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम के ऊपर गुण. Is it the inspiratory reserve volume due? It is the inspiratory reserve volume. Can inspire by forcible inspiration above the tidal volume. Tidal volume के ऊपर forcible respiration से. Done? Is that clear, दीपांशी? सारा समझ आ गया? आरजू done. Average is around 2500 to 3000 ml of air. This is an MCQ question again. अब आ जाओ expiratory reserve volume. सांस अंदर तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया. Can we also expire extra, Alisha? राइट. यश कैन बी एक्सपायर एक्स्ट्रा. यश का नाम विशु है. यश कहता है मुझे यश मत बुलाओ, विशु बुलाओ. एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज अराउंड 1000 to 1100 ml. इज दैट क्लियर? फोर्स करके एक्सपायर कर दिया. तीनों टाइडल वॉल्यूम क्लियर है. 500 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 ml. Residual volume, there is certain amount of air in the lung जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, which is always going to stay in the lungs. That is called the residual volume. Is that clear? There is certain amount of air in the lung जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, which is always going to be there. Even after forceful expiration, you cannot. It will remain in the lungs even after forceful expiration. 1100 to 1200 air. This is the residual volume. Neha, clear? Done. Badal, clear? Right? Which will prevent the alveoli to collapse. ये हमेशा lungs में रहेगी, which is going to prevent the alveoli from collapsing. ये थी volumes. जब different volumes mix हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? Capacity. जब different volumes mix और match हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? बताओ मेरे chat section पे. बन जाएगा capacity. क्या बन जाएगा? Capacity. क्या बन जाएगा? Capacity. So we have inspiratory capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity, total lung capacity. दिख गया? When the mix is a volume, inspiratory capacity. क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम के ऊपर क्या लिया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका? टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका? 500. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके ऊपर कितना था? 2000 से 2500. तो ये क्या बन गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. टीवी प्लस आईआरवी.
टीवी एक्सहेल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या एक्सहेल कर रहे हो? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1200. सो दिस इज am I clear? Functional residual capacity is expiratory reserve volume जो रहती है लंग में plus residual volume. Functional है, expiratory is there, you have not exhaled it. Expiratory reserve volume plus residual volume सबको मिला दो तो total lung capacity. Residual volume मिला दिया, ERV मिला दिया, tidal volume मिला दिया, IRV मिला दिया, या vital capacity plus residual volume सबको मिला दिया minus RV. Tidal volume, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume. पर residual volume नहीं है, RV नहीं है, residual volume नहीं है. There is no in vital capacity. Total lung capacity में आपने residual volume भी डाल दिया. Is that clear? Done? Naminath, I don't know when is NEET, beta. I really don't know when is the exam like that. Right? Let us now come to the exchange of gases. Last class I told you very clearly where does exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place in the alveoli and in the lungs. Divi, you tell me. Manu, you tell me. The exchange of gases in the alveoli of the lungs and in the tissues happens because of what? Do you remember we discussed in the last class that it happens because of diffusion of gases? Rati, do you remember we discussed this? Divya, do you remember? Anu, this is because of diffusion of gases. We don't want to spend ATP in doing it. It is a passive process. It is diffusion. Why does the diffusion occur, Manu? Nitin, why does the diffusion occur? Rajvinder Kaur, why does the diffusion occur? The diffusion occurs because of a difference in partial pressure of gases. If there is high oxygen, low oxygen, oxygen will go. If there is high CO2, low CO2, CO2 will go. It occurs because of a difference in partial pressures. We discussed this much. Can I give you the exact volumes? You will have to remember them. This is very important. So I will have to tell you the exact values, right? Please by heart this table. It is not that difficult, but you will have to remember it. There is a pressure gradient. Alicia has been kind enough to use the correct word. There is a pressure gradient. Because of that pressure gradient, diffusion of gases occurs. Is that clear? Write it on my chat section, please. Please write it on my chat section. You are the best students on planet Earth, and I am so happy and so proud to be your teachers, especially. Sorry, boys. Sorry, but especially my girl gang. Yes, Kajal, Gyan, Divya, Rupal, Jasrotia, Shreya, Sanjana. Sorry, boys. You all of you are the best in the world, but sorry, 55% girl gang, 45% boy gang. Okay, sorry, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. Sorry. Yes, but girl gang any day. Yo, everybody. Let's see. Kal quiz hoga girl gang. Second आए ना? Pitti. Done, everybody. Let's move forward. हम और गुन, girl gang and गुन, दो लोग, ठीक है? नहीं यार, 2-3-4 बच्चे तो बॉय गैंग में भी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? डन, ठीक है? गर्ल गैंग एंड गुड. चलिए आ जाइए. ओके एवरीबॉडी पे अटेंशन इन द क्लास प्लीज. पे अटेंशन. अरे ये क्या हो गया? सॉरी. ओके, कैन यू सी दिस? अब एटमॉस्फेयर में देखो बहुत सिंपल है. सबसे पहले कौन है? ये कौन है? हवा. अगर ये पर्सन है, ये गुण है, गुण, ठीक है? फोटो गुण की बन रही है. ये गुण के लिप्स ऐसे क्यों है? Okay, let's make one more smart photo. Better. Okay. गुण ने बाल कलर कराए हुए, ब्लू स्ट्रीक्स, ठीक है? बाल कलर कराए हैं, ब्लू स्ट्रीक्स, थोड़ी मूंछ भी है और थोड़ी दाढ़ी है. ओके,
यार, हंसो मत यार. गुण, इज दिस फाइन? डार्विन लग रहा है. गुण सच बता दो, नहीं अच्छा लग रहा है, नाम बदल दो. गुण ने ऐसे कर दिया. यो परफेक्ट. ठीक है. सिद्धांत, वरना सिद्धांत कर दूंगी मैं. अब ये रहा एयर, ये रहा गुण का लंग्स, और ये रहा टिश्यू. ठीक है. परफेक्ट. एयर के अंदर ऑक्सीजन है 159 O2. लंग्स के अंदर O2 है 104. O2 कहां से कहां मूव करेगा? लेट अस ओनली टॉक अबाउट O2. O2 कहां से कहां जाएगा प्रज्ञा? O2 जाएगा एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई. हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डिफ्यूजन इनसाइड द लंग्स. आ गया लंग्स में. ब्लड जो आ रहा है, द ब्लड विच इज कमिंग टू द लंग्स, ये कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो लंग्स पे आ रहा है, जो लंग्स पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके पास कितना ऑक्सीजन है? 40. लंग्स के पास कितना आ गया? 104. लेट्स से 90 आ गया, 95 आ गया. राइट? इज दैट क्लियर? तो अब कहां जाएगा? फ्रॉम एल्वियोलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बिकॉज एल्वियोलाई के पास ज्यादा है ना, it will go from the alveoli to the deoxygenated blood. yes or no? एक एक करके करते हैं. it is not blur. अब deoxygenated blood जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो deoxygenated blood हो गया ऑक्सीजनेटेड, उसके पास पहुंच गया 95. टिश्यूज के पास कितना है? यहां से ऑक्सीजन लेकर, देखो मैंने 95 लिखा था, चला गया टिश्यूज के पास. टिश्यूज के पास कितना है? फिर से 40. तो 95 ब्लड आ रहा है. मान लो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मान लो ये है टिश्यूज. टिश्यूज के पास है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 95. फ्रॉम वेयर विल द ऑक्सीजन मूव? फ्रॉम वेयर विल द ऑक्सीजन मूव? फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज. फ्रॉम ऑक्सीजनेट, एंड अगेन टिश्यूज से ब्लड जो है वो सिर्फ 40 ऑक्सीजन लेकर वापस एल्वियोला पे आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके. It is so simple. I really don't think anybody can have any doubts. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? Can you see this? अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, it is very little in the atmosphere. It is just 0.3. In the alveoli, it is 40, right? And the deoxygenated blood has 45. Alveoli has 40. There is blood में high pressure. Alveoli have low pressure of carbon dioxide. So it will come from the blood to the alveoli. Alveoli to outside. Alveoli to outside. Is that clear, everybody? Blood to alveoli. Jaggu, absolutely right. And if you see, tissues के पास है 45, oxygenated blood के पास 40. So it will come from tissues to oxygenated blood 5. That is why oxygenated blood gets carbon dioxide and gets converted to deoxygenated blood. Is that clear? Oxygenated blood is the one which is going to get carbon dioxide and get converted to deoxygenated blood. If you have any doubts, you can write a yes ma'am. If you have any doubts, you can write a yes ma'am. Right? That yes ma'am, this is the doubt that I have. Otherwise, it is absolutely crystal clear. I hope it is absolutely crystal clear. Gotcha. Please make sure that you like, share and subscribe. It's so important for us also to know that kids love us as much as we love them. Perfecto. Done? Perfect. Everybody, let's quickly move ahead. So this is the same diagram again. Can you see that? Inspired air, O2, 104. Right? That is why 104 O2 is going here, 95. But here O2 is 40. So 95 is giving to 40 and coming back as O2 40. Yes? CO2 is here 45 going to here 40. Ye blood CO2 is going to, oxygen is coming into tissues. Yes? So what is happening to CO2? CO2 is going from tissues to the blood. What is happening to oxygen? Oxygen is going from blood to tissues. What are the tissues doing with this oxygen? The tissues are doing aerobic respiration. Right, Vishu? What are the tissues doing with this? The tissues are doing aerobic respiration. What are the byproducts of aerobic respiration? Carbon dioxide, lactic acid if it happens in the presence, in the absence of carbon dioxide. And what is the byproduct? ATP. Yes,
ATP and carbon dioxide. That carbon dioxide which is produced in the muscles. Is my larynx working? Is my larynx working right now? Yes or no? Yes, ma'am. So if my larynx is working, does it require a constant supply of oxygen? Yes. And what is it producing? I'm 100% sure it's producing carbon dioxide, which is being exhaled out. Which is being exhaled out. Absolutely. And this is the tissue. Right? So in the tissue, what is the O2? 40. The blood which is coming, what is the O2 of the blood which is coming to the tissues? What is the O2, Vishu? What is the O2? What is the O2 of the blood which is coming? 95. What is the O2 of the tissues? 40. Where is high pressure? Here. Where is low pressure? There. How will the oxygen go? High to low. What is the pressure of the carbon dioxide? Just 40. What is the pressure of the carbon dioxide in the tissues? 45. So from where will the carbon dioxide go? From the tissues to the blood. Blood will take it to the alveoli. Alveoli will give it outside carbon dioxide. Look at the arrow. And the oxygen will be brought in. Is that clear? This is all happening because of diffusion. There is a gradient. There is a difference of partial pressures which is causing this. Are you understanding? Sanju, Arzu, Emily, Sarah, Manu, Kiran. Right? Is that clear, everybody? Are you all understanding? Now, do you know what is the difference of now, is the atmosphere made up of many gases? Is the atmosphere made up of many gases? Yes, ma'am. So because the atmosphere is made up of many gases, the amount of pressure which a single gas exerts when there are many gases, what is it called? It's called the partial pressure. What is it called? It's called the partial pressure. Am I right, everybody? The amount of pressure which a single gas exerts when it's a lot of gases is called the partial pressure. Right, Rao? Done? So you need to understand that you need to have a gradient. That means the gases will always move from high pressure to low pressure. That's called the gradient. That's how gases move. Also, you need to remember that the human body. Acha, tell me one thing. Is it easy to be good or bad in today's world? It's a very offbeat question, but you tell me the answer. In today's world, in general in the world, is it easy to be good or is it easy to be bad? Thank you, Anu, thank you so much. Tell me, generally, is it easy to be good? Obviously, Emily, well done. It's easy to be bad. Goodness takes so much from you. If you're kind to somebody, if you help somebody, the world will look at you. Why is this person being so kind? Right? It's always easy to be bad. It's really difficult to be kind all the time. It's difficult to be compassionate. It's difficult, I feel, to speak the truth. It requires a lot of courage. I think it's very easy to be bad. Similarly, in the human body also, all things, and you know, like generally tell me, are good things attractive in life or are bad things attractive? Generally, the world will do drugs. Bad things are very attractive. Generally, the world will drink alcohol. Bad things are very attractive. Generally, the world will smoke. Right? Generally, the world will. So, all bad things, generally, I feel like how movie mafia shows them and how, you know, the popular culture portrays them, that all the bad things look very attractive. It looks very attractive. You need to meditate, very good thing, very few people do it. You need to be kind, very good thing, very few people do it, right? You need to offer gratitude to the world, very good thing, very few people do it. Is it not? So similarly, the body also knows carbon dioxide is very good, but it will still kind of fall into a relationship with carbon dioxide. So carbon dioxide, imagine, is a bad thing. Right? It's a bad thing, but it will still have 20 to 25 times higher affinity. MCQ question. Right? And carbon monoxide, which is even more dangerous, will have 250 times more affinity. Always remember them. Oxygen, which is life-saving, oxygen, which is good, is neglected. Neglected, right? Chal, hatna types. Right, everybody? Now the diffusion membrane, diffusion iske through the alveoli. Can you see this membrane? Ah, what happened? Kya kar di tum? Screen. Don't worry, we'll figure a way out. Okay. Can you see this?
Yeah. So can you see the alveolar membrane? Can you see the alveolar membrane? Yes. Now it's made up of 3 membranes. Number 1, जो blood vessel होता है उसकी एक बहुत थिन एपिथेलियम होती है कवरिंग. जो ब्लड वेसल की एपिथेलियम होती है वो बहुत थिन होती है, वो सिंगल लेयर होती है. इट्स अ सिंगल लेयर. उसका नाम होता है एंडोथीलियम. क्या नाम होता है बता दो? एंडोथीलियम. एंडोथीलियम. राइट. इसके बाद जो एल्वियोलाई की कवरिंग होती है वो भी एक सिंगल एपिथेलियम होती है. ये दोनों सिंगल एपिथेलियम स्क्वामोस एपिथेलियम होती है. स्क्वामोस एपिथेलियम. स्क्वामोस. कितनी बार ऐसा हुआ है मॉम डैड घर पे नहीं है, बहुत भूख लगी है, सिर्फ ब्रेड गरम की, जैम लगाया और चाय के साथ खाया. सच में कंफर्ट फूड. यस और नो? कुछ भी खाने को नहीं है, 2 पीस अच्छे से कड़क गरम ब्रेड मिल जाए, थोड़ा सा बटर मटर या घी लगा दो और ऊपर जैम लगा लो दोनों के बीच में और चाय बना लो गरम भर के कप अदरक वाली चाय एंड जैम, ब्रेड जैम या मैगी बना लो. यस एवरीबॉडी? डन. तो फिर ये 2 लेयर के बीच में, ब्रेड की 2 लेयर के बीच में जैसे जैम होता है, इन दोनों लेयर के बीच में जैम का काम करता है बेसमेंट. द वर्क ऑफ जैम इज डन बाय द बेसमेंट एपिथेलियम or the basement membrane. Is that clear everybody? So you do have the endothelium of the blood capillary, which is a squamous epithelium. You do have the squamous epithelium, which is a single celled layer. Both of them are squamous. ये भी squamous है, squamous of the alveoli. ये भी squamous है, squamous of the blood vessel. और दोनों के बीच में jam का काम करेगा. Like a jam, you will have the basement membrane. How many layers are there? Total 3. It is called the unit membrane. Don't forget this. You will have a similar membrane in the kidney. You will have a similar membrane wherever you need to filter stuff. Right? So wherever you need to filter stuff, you need to have very, very thin membrane so that filtration happens as a squamous epithelium. How many of you have gone pitai sometimes? क्योंकि you after pouring the tea आप वो जाली साफ नहीं करते हो, तो जो छन्नी होती है for the chai that becomes dirty, and then your mom tells you इसको साफ करो. याद आ रहा है? Right? Yes. So it's just like the bread jam. There have to be 2 pieces of bread and jam in the middle. So you will have squamous epithelium of the blood vessel. There will be squamous epithelium of the endothelium, and you will have a basement membrane. So wherever filtration needs to happen, you need very thin membrane. Otherwise, filtration will not happen. You can't have cuboidal epithelium here. You cannot have columnar epithelium here. You just cannot have those membranes where there is no filtration. Am I right, everybody? Write to you on the chat section, please, for me. Thank you, Anutanu. Done. So total thickness is much less than a millimeter. Very important, and it is favorable for diffusion. You will have a similar membrane in glomerulus. That is why glomerular will be able to do filtration. Across this, O2 is going to come inside from the alveoli to the tissues, and CO2 is going to go outside from the tissues to the alveoli, alveoli to outside. Is that clear? Is that clear? Right? Done. Let's come to the transport of gases. Ouch! Transport of gases, transport of oxygen and carbon dioxide. आज क्या हुआ? आज ना मैं अपने गार्डन में घूम रही थी, ऐसे सर ऊपर करके पेड़ों की तरफ देख रही थी. 2 कोयल चिल्ला रही थी करके, फैसिनेट हो गई, जैसे लिटिल चाइल्ड इज फैसिनेटेड ना. गिलहरी खाना खा रही थी, उसको मैंने फैसिनेट होकर देखा. फिर एक देयर आर सम गुआवा ट्रीज, उस पे एक पैरेट बैठकर गुआवा खा रहा था, उसको मैं बहुत फैसिनेट होकर देख रही थी. देन देयर वर सम बर्ड्स व्हिच आई वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज़ दे वर रियली स्मॉल वॉबलर्स. तो मैं अपनी बाइनोकुलर से फैसिनेट होकर कर रही थी और नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, मेरा कोई ध्यान नहीं था. आराम से अलग ही फैसिनेट हुई हूँ मैं, जैसे मैं मार्स से आई हूँ अभी और मैंने पहली बार पैरेट देखा है या पहली बार स्क्विरल देखी है. राइट? 5 किलो ज्वार मंगाया मैंने आज सुबह, 2 किलो खा चुकी है गिलहरियां. मुझे लग रही है मेरे गार्डन में जितनी गिलहरियां उनको लूज मोशंस होने वाले हैं कल से. राइट? वो सब ऐसे सुबह पड़ी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है गिलहरी की बॉडी में ना सेटाइटी सेंटर नहीं होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कितना खाना है. मैं सुबह जाके आई पुट फूड, बाय आफ्टरनून इट इज ओवर. आई एम ऑल्सो लाइक दैट सुपर हाइपर पर्सन. आफ्टरनून आई पुट फूड अगेन, बाय 4 o'clock इट इज ओवर अगेन. 4 o'clock I again go put food. Their tummies have come out like this. All the squirrels are looking like fat squirrels, like big fat squirrels. Their tummies out. I think they don't have satiety center in their body. Right? They're eating and eating. Tomorrow morning all squirrels will be like this. They'll be trying to climb trees. Then they'll fall down.
I think I will have to buy treadmill for squirrels, or maybe make treadmill for squirrels, because there's some 30 squirrels and they are extremely overfed, right? They are just full. Imagine they finished like 3 kg jowar in 1 week. Today morning I got like 5 kg jowar. Can you imagine? It's like a big bag full of jowar seeds. Somebody told me don't give rice. The eggshell of the birds does not develop. Their ovaries don't function, so you must never give rice to them. So I got bajra and jowar. They are having a great time. It is like feast time for them. They must be thinking, "Ye Merry Christmas to 25th ko ho gayi. Which secret Santa is giving food to us?" But I think their mouth, and they're so naughty. You know how they are so lalchi. God has made them so lalchi. They'll be like sitting. I think around one corner of their mouth will be swollen first, right? They'll put everything. Then another corner of their mouth will be swollen. Then in front also will be swollen. But somehow they will run, and within 5 minutes they will come back. I think they will just put it in their nest somewhere. Again come. Oh, they are very, very greedy. Full day they'll be eating. I think tomorrow they'll all be like, we don't want more food. Anyways, so come back, right? Let's come to, so yeah, so I was telling her I was looking here, I was looking there like this, and there was this big, there was like this metal thing of that gutter hole was there. So my foot went on that, and thank God I balanced myself, otherwise I would have seen stars and squirrel and parrot. Everything would have got mixed. Yes, happily. How come squirrel, parrot and stars? Suddenly I would have seen stars. I will do garden tour. Don't worry, don't worry. Okay, let's come to transport of gases. I'm not getting time to make videos on all, man, but I will do it. Yes, let's come here. Blood is the medium of transport of oxygen and carbon dioxide. This is very important. That is why I took a small break. Next 10 minutes, I want full attention, right? Next 10 minutes is like full on attention, right? But birds and their animals are so smart, okay? Animals are so smart. If I'm telling you this, let me take 2 minutes and tell you this. We have anyways not interacted for a long time. So what I do is, I'm also very smart, okay? But animals are even more smart. God has given human beings big brain, cranial capacity is very high. Evolution chapter, don't forget. But these animals are also very smart. So what I do is, every day morning I make juice for myself, right? So I make juice. If you've seen juicing machine, we put fruit, juice comes out from one side, which I drink gut, and pulp is there, right? So that pulp is on the other side. I take the pulp and I put it outside. Thinking that pulp is there, why to waste it? Anyways, I made a composting station in my house. I'm making my own bioenzymes. I will show you all of that, right? So carrot ho gaya, beetroot ho gaya, jo bhi fruit, vegetable hai, winters, I make a juice. And I take the pulp out, I put it for the birds. They don't touch the pulp. They must have tasted on one day, 20 birds came. They took it in their mouth. Then they realized this curly haired woman is juicing and drinking juice. In her black pajamas, roams around full day with that orange, white, black t-shirt, Vedantu. Makes videos sitting out in the garden, drinks all the juice and wants to have dirty pulp, wants to give us. This curly woman thinks that she is smart. After that, they didn't touch it. I had to get jowar for them. They are so smart. Because it is only dry pulp, right? It has no juice. I've squeezed. I've had the juice. Imagine it looks so beautiful. Papaya pulp is there and beetroot pulp is there. Green, everything nice and beautiful. But they will not touch it. I'm sure it tastes pathetic. So after that I stopped adding it and I add it in my compost machine. They won't even touch it. Like, it will be there, okay? It is there in the garden. I put it in, like, they are so smart. They'll be like sniffing, no smell is coming. This dirty woman, she has had all the juice and she wants us to drink this juiceless pulp. We are not eating it. They are absolutely smart. You put jowar, bajra now, they'll come running. But you put that pulp, they'll look from there. What does this woman think? She's very smart. Humans, they'll be like, human? Who human? I know more than you. Sitting like this. Human, don't try and fool me. And they go up their tree. Yes? Now let's come back to the class. Okay, now no talking. We've talked enough. I've told you enough stories. Now you'll stay back and pay attention in the class. Yes? They're very smart. So, exchanges happened in the lungs. I told you the partial pressures.
in the lungs. And now, yes, now let's connect the dots. Okay? So, words सुन लेंगे फिर आएंगे नहीं पीयूष कल से. Now pay attention. Now focus mode on. Yes, we've talked, we've enjoyed, we've laughed. He. Your entire day stress is over. Now focus. So the exchange has happened in the lungs. The exchange happened, I told you day before yesterday also, the exchange happened because of partial pressures. Do you remember this, everybody? So the exchange happened because of partial pressure of gases. Now, after the exchange, the transport has to happen. For example, Divi Modi decides to go from Ahmedabad to Surat. From Ahmedabad to Surat, from Surat to Ahmedabad, there is a train. Divi takes a train from Ahmedabad, reaches Surat. Exchanges happen. But in Surat, Divi has to go to her uncle's place. So to go to her uncle's place, she needs an auto. She will sit in that auto and go. She tells auto wala, I will give you 100 rupees. Auto wala takes, hey Divi, nothing like this. I want 200 rupees. Then somehow they will reach a mutual agreement of 150 rupees or something like this. So exchange has happened. That train is the diffusion. But from Ahmedabad, she has reached Surat. The diffusion has happened. But does the blood have to carry it? Yes, na tera na mera 150. Does the blood have to carry it? Yes. So that is carried. 97% of oxygen is carried by RBCs in the blood. What is the constituent of blood? Can anybody tell me? Blood will have RBC, WBC, platelet, but only RBC is the one which is useful to us, and the blood will also have fluid, which is called the plasma. Am I right? Am I right? The blood will have RBCs and the blood will have plasma. WBCs, we are not talking about immunity. We will talk about it at 9 p.m. We are not interested. We are not talking about blood clotting. We are not interested. We are talking about RBCs and plasma. So 97% of oxygen is carried by plasma, RBC. Remaining 3% is carried dissolved in the plasma. So एक बार oxygen को summarize कर दीजिए. Oxygen 100%, 97% carried by the RBCs, 3% carried by the blood plasma. This is about oxygen. Let us come to carbon dioxide. 20 to 25% of carbon dioxide is carried by RBC. How much? Just 20 to 25% is carried by RBC. The remaining 70%, the remaining nearly 70% is carried by bicarbonate ions, HCO3 minus, and 7% is carried dissolved in plasma. So O2 के दो parts हैं, एक है 97% which is RBC, एक है 3% which is plasma. कार्बन डाइऑक्साइड के तीन parts हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का part number 1 is 20 to 25% which is carried by RBC, 70% is carried in the form of HCO3 minus, and 7% is carried as plasma. Write this, very important. Will you remember this? I don't think so. There should be any problems in remembering this. Done. आ जाओ transport of oxygen पे. Now hemoglobin is a red colored iron containing pigment. Heme and globin, right? So red colored iron containing pigment होगा hemoglobin. Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible fashion. What is reversible? Oxygen ज़्यादा है, hemoglobin से bind होगा. Oxygen कम है, oxygen out, carbon dioxide in. Reversible. It will take oxygen, give oxygen. Take carbon dioxide, give carbon dioxide. Take oxygen, give oxygen. Take carbon dioxide, give. So it is a reversible. Is that clear, everybody? Each hemoglobin can carry, very, very important, a maximum of 4 molecules of oxygen. MCQ question. Very important. Any doubts? Any doubts? Binding with hemoglobin is related to partial pressure. Now you tell me, if oxygen's pressure is less, will it bind Dipanshi? Will it bind Jaggu? Will it bind Dipi? Will it bind Sai? Will it bind Ayush? Oh my God, Ayush, please take care, Ayushi. Don't worry, you'll be fine. Even I did the same few days ago. You'll be fine, right? Doesn't have hemoglobin, Emily. It is with the help of bicarbonate ions.
Is that clear, everybody? So it is 4 molecules, and if the partial pressure of oxygen is less, it will not bind to. Is that clear? Binding of oxygen with hemoglobin is related to partial pressure. Pressure ज़्यादा होगा तो bind करेगा. Partial pressure of carbon dioxide. अगर carbon dioxide बढ़ गया, if suppose you have 10% CO2, it will bind to what? It will bind to what? Piyush, it will bind to what? Nida, it will bind to what? I will do it, Nada. This is 2023 syllabus only. It will bind to carbon dioxide. It will bind to carbon dioxide. Is that clear? Partial pressure, hydrogen ion concentration and temperature of other factors. इन सारी चीजों को अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ एक एक करके, स्पेशली P50. तो सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें समझाती हूँ. 1 second, where can I can do it on the slides. 1 second. Oopsie, ये कहाँ से आ गया? Okay. Now, see, this is very important. This is very, very important. Please pay attention to each one of them. Let's just look here. If I look at tissues, this is very important. I want you to pay attention, please. Very important. In tissues, carbon dioxide is more. Oxygen is less. Therefore, there is low binding. That paragraph I am explaining with the help of handmade notes. Low binding of oxygen to hemoglobin. There is low binding. What does this carbon dioxide in tissues do? This carbon dioxide binds with water. In the presence of an enzyme inside the RBC referred to as carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. When they bind to each other in the presence of the enzyme carbonic anhydrase, they form carbonic acid H2CO3. This H2CO3 dissociates in H plus and HCO3 minus. This H plus, once it increases, it decreases the pH. Therefore, oxygen binding further decreases. Can you see that? Second point. I'll make stars. Low binding when carbon dioxide is more. Low binding when pH is low because H plus is high. H plus ions are going to decrease the pH. Are you all able to understand? Right? Number 3, first point. Second point. Number 3 point. In the tissues, there is always production of ATP. In the tissues, oxygen is being used to produce ATP. ATP is being produced. Am I right, everybody? ATP is being produced. Am I right, everybody? Oxygen is being used and ATP is being. This is a exothermic reaction. So heat is being generated, which will further decrease oxygen binding. Therefore, tissues you have low oxygen binding and therefore oxyhemoglobin dissociates, which is coming from the lung. The oxygen goes to the tissues. It does not bind to hemoglobin. It in fact goes to the tissues. There is no binding. Oxygen and hemoglobin dissociate. It does not bind to hemoglobin. Is this clear? This is very important. So whenever carbon dioxide increases, the amount of oxygen decreases. There is low binding of oxygen to oxygen in the presence of carbon dioxide because carbon dioxide is 25 times more affinity to hemoglobin. Carbon monoxide is 200 to 250 times more. This carbon dioxide of the tissues binds to water to produce bicarbonate ions. You can see first
Carbonic acid dissociates to form H plus and HCO3 minus. Whenever the amount of H plus increases, pH decreases, oxygen binding decreases. In the tissues, oxygen is being used to produce ATP to burn glucose. It is an exothermic reaction. In the presence of heat, temperature increase. Temperature word is written in your NCERT. Binding decreases. So in the tissues, you will have low oxygen binding. Is that clear? In the tissues, oxygen will be given to the tissues. If this is the graph that we saw there, the tissues have a shift to right. Very important. That means oxygen, hemoglobin break up. The dissociation, break up, wrong, break up, dissociate. It is a shift to the right. The shift to the right occurs in tissues. Am I clear, everybody? In the oxyhemoglobin curve, the shift to the right occurs. It is a dissociation. Thank you so much, Manu. I'm so proud of you. Share your notes with me. Is that clear? Whereas, if I talk about lungs, carbon dioxide decreases, oxygen increases. Will binding occur? याद रखना, राइट? यहां सबसे पहले याद रखना, अगर मैं टिश्यूज की बात कर रही हूं, इसमें T है, तो ये शिफ्ट टू RIGHT, TT मैच करवा देना. लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है. डन. लंग्स के अंदर कोई एटीपी नहीं बन रही है, टिश्यूज एटीपी बनाते हैं. नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस टेम्परेचर भी कम है. टेम्परेचर भी यहां क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है. लंग्स में टेम्परेचर कम है, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, CO2 कम है. लंग्स में CO2 कम है तो H2CO3 भी नहीं बनेगा, H प्लस भी नहीं बनेगा, तो देयर इज डिक्रीज H प्लस. तो लंग्स हैव शिफ्ट टू लेफ्ट, LL, TTLL, TTLL, TTLL. pH ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है. लंग्स में दिख रहा है, मैं लिख रही हूं, हाँ, pH ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ जाएंगे, एसोसिएट होंगे. देयर विल बी एसोसिएशन, देयर विल बी शिफ्ट टू लेफ्ट. इज दैट क्लियर, गर्ल गैंग, बॉय गैंग, ऑल गैंग? इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? एसोसिएशन होगी. डन? बेटा डरो मत, नीट अराउंड द कॉर्नर की वजह से टेंशन ना लो. बस मैं थ्योरी कराती चलूंगी, टेस्ट लेती चलूंगी. तुम अपने होम टेस्ट के लिए बुक से पढ़ते चलो, जो मेरी बुक है, और देखना इस बार 360 और 360 लाओगे. बस फिजिक्स केमिस्ट्री का ध्यान देते हैं. दैट इज ऑल दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चकने फट्टे कर देना. क्लियर हो? पक्का क्लियर हो? डन डना डन हो जाएगा. यस, एवरीथिंग. यहीं से कंटिन्यू करूंगी कल की क्लास में. चैप्टर खत्म करके क्विज ले लूंगी. व्हाट्स से, दैट्स ऑल. मैंने आपको शिफ्ट टू राइट करा दिया, मैंने आपको शिफ्ट टू लेफ्ट करा दिया, मैंने आपको कर्व करा दिया. डिजीजेस करानी है, उसमें भी 3-4 डिजीजेस करानी है. फटाफट कल की क्लास में करा दूंगी. चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स जो है ना, वो सबसे अच्छा करके दिखाएगा. बट एक चीज बेटा मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आज भी वही चीज आपको कहूंगी, 3 चीजों पे मेहनत करो अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है. क्या है वो 3 चीजें? जहां भी जाओ डाउट सॉल्व करवाओ. बिना डाउट्स के एग्जाम में अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डाउट्स, बहुत मेहनत करो बेटा, पर अपने डाउट्स के पीछे जिद से पड़ जाओ. टीचर को पकड़ो, क्लास टीचर को पकड़ो, डाउट एक्सपर्ट को पकड़ो. किसी जगह जा रहे हो, कहीं जगह पैसे दिए, किसी और टीचर के पास जा रहे हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कहीं ऑफलाइन जा रहे हो, बोल दो टीचर ने पैसे लिए हैं, मेरे डाउट्स खत्म करो. बैठ जाओ उनके पास चौंकड़ी मार के 6 बजे के बाद, क्लास खत्म होने के बाद डाउट सॉल्व करो. 2-2 घंटे बैठ के अपने डाउट सॉल्व कराओ. राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. वेदांतु में जैसे बच्चे हमें फोटो खींच के भेज देते हैं, आप उनको फोटो खींच के बोलो नहीं, वेदांतु वाले मेरी फोटो खींच के डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तुम मेरे डाउट सॉल्व करो. डाउट्स. दूसरा, उनको बोलो हमारे टेस्ट ले, हम हर हफ्ते बच्चों के टेस्ट लेते हैं यहाँ. बोलो उन्हें हमारे टेस्ट लो, हमें टेस्ट देना है, जितने टेस्ट दोगे उतना अच्छी होगी आपकी परफॉर्मेंस. टेस्ट. और तीसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री के जान से पीछे पड़ जाओ.
दैट इज ऑल। जहां भी पैसे दे, अगर वेदांतु का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, और 2-3 हजार का मत सोचो, कहीं क्रैश कोर्स हो सकता है 3 हजार का मिले, तुम्हें लग रहा है बहुत सस्ता है, बेटा बिना डाउट के और बिना टेस्ट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। फिर तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ लो, पढ़ाई तो यहां भी हो रही है। यस, पढ़ाई तो वो नहीं है, पढ़ाई है जहां डाउट, जहां इंटरेक्शन हो सके, फिर तो क्लास का फायदा है ना। अगर कोई 2000 का 3000 का क्रैश कोर्स दे रहा है, उसको 3000 भी मत दो, उसको बोलो फिर तो मैं YouTube पे फ्री में पढ़ लूंगा, बिकॉज अगर मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तुम मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हो, मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे टेस्ट नहीं ले रहे हो, मेरे को अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग का टाइम नहीं है, मेरे 20-30 टेस्ट नहीं, मेरा एनालिसिस नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें 3000 क्यों दूं? फिर तो मैं फ्री में पढ़ूं। पैसे तो मैं इसके दे रहा हूं ना, जो मुझे लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, जो मुझे माइक्रो कोर्सेज मिल रहे हैं, इनके ऊपर फोकस करो बेटा। अभी भी 4-5 महीने हम कर लेंगे। और अगर लगता है यार कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, अगर कोई मुझे पढ़ा दे तो इस साल भी मेरा रैंक आ जाएगा, थिंक अबाउट इट, रियली थिंक अबाउट इट। 24 जैन से मैं नया कोर्स स्टार्ट करने वाली हूं, just before Republic Day, get into this and do this. Really guys, यहां पर जो आपको ये देखो, अपलोड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, फोन में नहीं करना, लिखना भी नहीं है, टाइप भी नहीं करना, फोटो खींची डाउट की डाल दी। कहां होता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? मुझे तो कोई नहीं पता। फोटो खींच के डाउट सॉल्व हो रहे हैं। राइट 20+ टेस्ट विद डाउट्स, विद डिस्कशंस। सो प्लीज गो गेट दिस। To get this, all that you need is a code. The code is VD and the crash course will be available to you. Take care. मिलते हैं 7 PM. Bye. Take care. इजरा, जहां तक किया वहां तक का टेस्ट है बेटा। बाय गाइस।